Hello, so we are back once again with chapter number 2. Last time we tried to understand what is utility, the concept of utility, the concept of total utility and marginal utility. Lekin last time, if you remember, I did not use any text. I tried to explain you the concept of total utility and marginal utility और उनके बीच का relationship. आज I'm going to use your text material and we are going to run through your material and understand कि जो हमने पढ़ा था वो कितने extent तक सही था and can we really understand and write things on our own. So coming up, आपकी किताबों में we begin with total utility and marginal utility. Total utility, they say TU is a sum of marginal utility, sum of all marginal utilities. That is marginal utility from unit 1, marginal utility from unit 2. ऐसे हम सारे ऐड करते जाएं तो that will be total utility. And अगर मुझे marginal utility of an n unit निकालनी है तो मैं क्या करूं? Total utility of n units minus total utility of n minus 1 unit. अब ये सब पढ़ के ये सारे फॉर्मूला देख के कंफ्यूजन होता है नहीं. Let's try to look at this particular table, something which I have already done, redoing it for you. Utility का concept मैंने आपको बताया था. This is cardinal approach wherein it is like at a particular time the utility arrived from or derived from by consuming 1 unit of a product, and if at all you can give numbers to it, right? तो ये assumption आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है. तो let's say it is the first unit and the benefit derived. पहली चीज है, जैसे तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, तुमने अपनी पहली घड़ी खरीदी और the benefit which is derived is like it is immaterial कि उसका ब्रांड क्या था, पर तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, तुमने घड़ी खरीदी. Utility is 100%. So if that 100% can be given a number, let's say 10, then the total utility of that 1 unit is 10 and the marginal utility is also 10. Yes? But when I got the second unit of the same product, then the utility increased. The total utility of 1 and 2 units put together has increased to 18. But what is the marginal utility? यही बात मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, ये बता के कि अगर आप ये बोलते हो कि सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से आपको 8 यूनिट्स की यूटिलिटी आती है, दैट मीन्स द टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 and 2 put together is 10 plus 8, so total utility is 18. So this explains why M1 plus M2 will be equivalent to 2 TU. Yeah, TU is equal to M1 plus M2 plus M3 and so and so. So second unit को consume करने पे total utility is 18. So marginal utility या the utility derived from the last unit क्या है? 18 minus 10, which is 8. Now this helps you to understand the formula Tn minus Tn minus 1. मतलब utility from unit 1 is 10, utility from unit 2 is 8. So the total utility of all n units put together is 18. Total utility of n minus 1, that is 18 minus 10. So this is the marginal utility derived from unit 2. I hope you can understand the formulas which are written above. So this table is also very clear to you. So similarly थर्ड पे जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपकी 24 होगी, बट मार्जिनल क्या होगी? 24 minus 18, which is 6. Similarly फोर्थ पे, फिफ्थ पे आप देखिए at the 6th unit what is happening. At the 6th unit the total utility is 30. When I try to find out the marginal utility, I derive that the total utility at 6 units is also 30 and the total utility at 5 also is 30. That means आपको कोई marginal utility derive हुई ही नहीं. And this is the point of equilibrium. This is the point where you should stop. This is the point जब आपको further कोई satisfaction या benefit नहीं मिलने वाला, तो you should stop consuming after the
6th यूनिट, रादर 5th यूनिट। सो अब यूटिलिटी समझ में आ गया है। अब देखो ये क्या ग्राफ्स बनाए हुए हैं आपके टेबल में। हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको क्या देख के समझ में आ रहा है? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, मेरी बात सुनिए, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, 10, 8, 6, 4, 2, कैन यू लुक एट दिस टेबल? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, राइट? सो रिलेशनशिप क्या बना? दैट टिल द टाइम mu is, though it is falling, but it is positive, it is falling. So मतलब mu कभी 10 से 12 नहीं हो रहा है, mu 10 फिर 8 फिर 6. So mu को अगर हम बात करें तो mu with each consumption keeps on falling, but till the time mu is positive, total utility will keep on increasing. सेकेंड चीज आपने क्या सीखी? जब mu 0 हो जाता है तब वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स दैट्स अ पॉइंट ऑफ satisfaction. Yeah, this is the time you should stop. So when mu is 0, tu would be the highest. So what, this is the second thing which you understood. So let's look at the tables which the book has drawn for you. Look at this. mu is falling. Can you draw this graph, बच्चा? 10, 8, 6. आपको सिर्फ यहाँ पर mu लेना है, यहाँ पर टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप दिखाते वक्त आपको बताना है कि कैसे mu is falling. ग्राफ को हमेशा लेबल जरूर करना. If you do not label the graph, you will not get marks. Simply mu is falling, total utility is increasing, right? And this is what they tell you. Here also they say, tell you the relationship wherein they say if mu is falling, tu is increasing. But the point where tu becomes maximum is the point where mu is 0. Can you look at it? Tu is highest when mu is 0. And जब mu जो है नेगेटिव हो जाता है तब tu नीचे गिरने लगता है, and that's a point of equilibrium. So I hope whatever is written here आपके दिमाग में बैठ गया है. Now after this guys, they are talking about कि इस पूरे ग्राफ या इस पूरे टोटल यूटिलिटी और mu मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, of course it is based on some assumptions. And what is that assumption? They say that, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, cardinal measurement, that is, though it is difficult, but they say if at all you can measure utility, then if at all you're ready to give numbers, then what is the number you're going to give if you're going to consume the first unit, the second unit? So this is known as cardinal measurement. That is, the law assumes that the utility can be cardinally or numerically measured. This is the first and the biggest assumption. Second assumption, बहुत जरूरी है. अब ऐसे तो मतलब we should not talk about things which are exceptions, like a drunkard, you keep on giving him alcohol, he'll keep on having more and more and more of it, right? A student who has that hunger of, you know, having more and more of knowledge, तो उसको तो तुम जितना देते जाओ, वो he'll keep on absorbing more and more of it. We're not talking about such as exceptions. Talking in a general sense, the rationale behind or the assumptions behind this assumption is that consumer is rational. उसको जैसे जैसे चीज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कीप्स ऑन कंज्यूमिंग, द यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड एट द पॉइंट व्हेन द यूटिलिटी बिकम्स जीरो, that is the time when the consumer should stop consuming. So we believe that the consumer is rational, we can give numbers, and yes, the product or the thing which we are talking about is homogeneous. This is very important. It's like I want to wear a white color shirt. Office जाती हूँ मैं, white color shirt. Now, how many white color shirts would I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, if I have 6 shirts for all 6 days, I don't need the 7th one till the time. But हाँ, white की जगह आप मुझे pink देते हो, blue देते हो, yellow देते हो. Now, there the concept will not apply. The concept applies when the product or all the units which we are consuming should be homogeneous, right? So, if I'm talking about a Frankie, I'm talking about a Frankie which I'm consuming. Same Frankie made in the same manner. It should not be Frankie के बाद burger, right? या Frankie के बाद pizza. This is very important. Homogeneity. So rational, consumer has to be rational. We can give cardinal numbers. Homogeneous, and of course continuity. There should not be a lapse of time. मैं morning में खाया, फिर दोपहर में खाया, उसकी बात नहीं कर रही हूँ. That is why I was very particular. At a particular time,
the concept of marginal utility steps in. If I'm consuming a homogeneous product, then this concept of mu is falling and tu is increasing till the time mu is positive. Tu keeps on increasing. Tu becomes highest when mu is 0, and I should stop once mu is 0. So it talks about constancy, that is all related factors like income, tastes, habit, choices, dislikes of a consumer should remain constant. They should not change. Yes, it talks about that the product can be divided or it can be divisible. मैं आधी रोटी खा सकती हूँ या एक निवाला ले सकती हूँ, ये बहुत जरूरी है. And yes, a given commodity can satisfy a single want of a person. If it is capable of satisfying more than one want, फिर ये concept या principle apply नहीं करेगा. So, guys, what you need to understand is that this law which is made on certain assumptions. The assumption that the habits, the tastes do not change, they are constant. It talks about single unit. It talks about that the consumer is rational. It talks about the fact that you can give cardinal numbers. It believes the fact that you can divide the product and use it. It talks about continuity. It talks about reasonable size or reasonability. So, with this, Alfred Marshall derives a law which says other things remaining constant, additional benefit assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time. अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो ये तो समझ में आ रहा है that अगर एक ही want है और कॉन्टिन्यूअली एक ही चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि वो वांट आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी. दिस इज व्हाट अल्फ्रेड मार्शल इज ट्राइंग टू से. यू डोंट रिमेंबर द डेफिनेशन, नो इश्यूज. राइट अबाउट द कंसेप्ट that it is possible for us to actually identify that what is the point where a person will feel satisfied if it's a single want at a particular point of time. And yes, the concept of total utility and marginal utility. Law of diminishing marginal utility, बारी बारी पूछा जाता है, यही वही चीज है that with each unit that you consume, the marginal utility keeps on decreasing. Guys, आप अगर 2 marks का क्वेश्चन लिख रहे हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, तो जस्ट राइट डाउन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम इफ वी कंज्यूम a similar kind of product, then the utility derived from the product keeps on reducing or marginal utility of that product keeps on falling. Table zarur banana. Please, if you do not make a table, you won't get marks. If it is of higher marks, let's say 4 marks, then please write down the assumptions as well, and please write down the relationship between total utility and marginal utility as well in order to get better marks. Okay, now this is the curve. I think all of you can understand mu is falling. They have given you the what you can say. Okay, so I think ये सारे ग्राफ्स अब आपके लिए समझना आसान हो गए हैं. उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. गाइस, आप कोई भी डायग्राम अगर एग्जाम में बनाएंगे तो डिस यूटिलिटी, इस वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है. तो ऑन द वाई एक्सिस यू हैव एमयू, ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव डिस यूटिलिटी. जरूरी से प्लीज मेक द टेबल एंड देन मेक द ग्राफ, राइट? सो प्लीज ग्राफ, टेबल आपने बना लिया तो ग्राफ बनाना इजी है, ग्राफ को लेबल करना, और वही 3 बातें जो मैं आपको बता रही हूं उसी बात को आपको लिखना है. द पॉइंट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सेइंग दैट एज वी कीप ऑन कंज्यूमिंग द यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग. ओके, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इफ somebody is a drunkard, then in that particular situation with each glass of alcohol his desire for having more will increase, but that's an exception. Similarly, हैबिट, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, एक बुक पढ़ूंगी, मैं दूसरी बुक भी पढ़ना चाहूंगी, मैं तीसरी. अभी मैंने थोड़े दिन पहले आई ऑर्डर्ड फॉर दिस आर्चीज कॉमिक
and I used to read it when I was a little girl. And trust me, I realized that I am still enjoying reading it just the way I used to enjoy when I was a kid. तो एक खत्म करी, फिर दूसरा, फिर तीसरा. Now that's a matter of habit. आप habit है, कोई चीज आपकी hobby है, you just want more and more of it. So the rule of marginal utility does not apply to things which are your hobby. या अगर आप माइजर हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं इन केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. इट्स लाइक पैसा कम होना अच्छा नहीं लगता, मोर एंड मोर ऑफ मनी. बट आई थिंक ये तो जनरल रूल है दैट पैसा किसी को भी खराब नहीं लगता. 100,000, 1 lakh, 1 million, more of money, happier I am. So it's not only about misers, but anyways, your text writes about miser, you write it as well. Yes, addictions है, पावर किसको पसंद नहीं है गाइज? मोर एंड मोर ऑफ इट. मनी किसको पसंद नहीं है? सो द रूल ऑफ, अब ये बेटा आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो. आपको एग्जाम में आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखो, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करो. उसका 2 नंबर का है तो वहीं बंद कर दो. 4 नंबर का है तो प्लीज उसका ग्राफ बनाओ. ग्राफ बनाने के लिए टेबल जरूरी है, और 4 नंबर के लिए है तो प्लीज एक्सेप्शंस भी उसके जरूर लिखिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी लॉ बनेगा तो विदाउट क्रिटिसिज्म तो नहीं रहेगा. क्रिटिसिज्म उसके वही होंगे जो उसके assumptions होंगे. प्लीज रिमेंबर, you remember the assumptions, you can actually write down the criticism. Like unrealistic assumption, that is product is homogeneous, right? They say the law of diminishing marginal utility is based on assumption like homogeneous continuity. It is talking about constancy. It is talking about rationality. So they say all those assumptions are unrealistic. You can measure it. This is unrealistic. This is, they don't believe in it. Goods can be divided. They don't believe in it. Then they say that marginal utility constant रहेगी, ये कैसे possible है? Simple सा concept. They simply say that it is just not possible for you to measure utility. कि पहले यूनिट को खाने पे 10 का बेनिफिट हुआ तो दूसरे को खाने पे 8 का बेनिफिट हुआ. They say it's just not possible. Maybe पहले को खाने में 10 का हो, दूसरे को खाने पे 11 का हो, और फिर तीसरे को खाने में 8 का हो. They say practically एकदम से marginal utility stepping in, because MU believes that whatever you are consuming in a constant proportion, right? Size same hai. So this is the biggest criticism about the concept of marginal utility. Once we have understood what is marginal utility, total utility, diminishing marginal utility, उसकी criticism, उसके assumptions, guys, लेकिन law अभी भी हम पढ़ रहे हैं तो obviously it is significant, it is useful, and we can see it. It is useful because it helps the consumers to understand that what is that thing which is giving them that maximum benefit, या वो कब क्यों कोई चीज नहीं खरीदना चाहते, maybe they are satisfied. So it helps you to understand. So it's useful to the consumers. So you can just write down that it creates awareness amongst the consumers for them to understand that why they are buying a particular thing, or how do they diversify their consumption if they are satisfied using a particular thing. It is useful to the government. Why? Because it helps them to frame policies like tax की policy, pricing policy. They know कि भाई if there is no utility, अगर आज मैं टैक्स लगा दूंगी, यहाँ पर ऑक्ट्रॉय टैक्स लगा दूंगी और ये रोड तो इस्तेमाल ही नहीं होती, there is no utility which is being derived to the consumer, why will they pay money for the same? So this concept of utility is very useful to the government. Most importantly, it helps you to understand this paradox of value. It helps us to understand that goods that have more value in use and zero or less value in exchange, जैसे कि air, water, इन सब की exchange value नहीं है या कम है, लेकिन value in use ज़्यादा है, right? लेकिन ये freely available है, तो obviously इनका प्राइस कम है. लेकिन on the other hand, goods that have more value in exchange but less value in use, जैसे कि gold, diamond, वो महंगे क्यों हैं? तो you understand that paradox of value in use and value in exchange. Yes, most important, law of demand. मैं अगला चैप्टर जो आपको पढ़ाऊंगी वो law of demand है. That is
how does the price of a good, when it falls, why does the demand for that product increases? क्या ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है कि नहीं, ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी. तो गाइज, फॉर द पर्पस ऑफ रिमेम्बरेंस इन द एग्जामिनेशन, अगर आपसे पूछा जाए, ये अगेन रीजनिंग एंड असर्शन में बहुत आता है, दे विल आस्क यू पैराडॉक्स इन वैल्यू एंड पैराडॉक्स इन यूज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देंगे, आपसे पूछेंगे. या आपको जनरली 2 मार्कर यूसेज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, तो इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर, इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसी बनाने में, कंज्यूमर को अपने डाइवर्सिफाई करने में, मैं क्या कंज्यूम करूं, हैव आई अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, लॉ ऑफ डिमांड. 4 बातें आप याद रख सकते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस. और अब आती है बात बच्चों की, प्राइस या मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस से क्या रिलेशनशिप है, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स लाइक क्या किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा क्या, या कम होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. लुक एट दिस. दे से, लेट अस से एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, तो वो कहते हैं उसका मार्केट प्राइस 50 है. नाउ दिस इज एन अजम्पशन, दिस दे हैव सेड assume. आई एम यूजिंग योर टेक्स्ट मटेरियल गाइज, so please, I am repeating, this is your HSC board examination. Do not change the headers. Use the same headers which are there in your textbook. It becomes easier for the examiner to check. You can use the same figures or you may change the figures. Figures समझ में आ जाएंगी तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. But stick to your text material. That's what I'm trying to tell you. So, एक यूनिट का उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी 10 लिया है, तो उन्होंने बोला उसका प्राइस 50 है. अब वो तुमको दिखा रहे हैं कि लेट्स से एक यूनिट है, माई MU इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? MU इन टर्म्स ऑफ मनी उन्होंने दिया हुआ है 10 into 10, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. एक यूनिट का 10 रुपया है, राइट? तो अगर तुमको 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आता है तो तुम उसके लिए 100 रुपया देने के लिए तैयार हो. मार्केट प्राइस क्या है उस गुड का? 50 है. अब MU और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है? अभी MU ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्राइस, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज 100, क्योंकि हर एक यूनिट का आपको ऊपर दिया था ना, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ₹10. तो अगर 10 मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसकी MU की वैल्यू कितनी है? 100, लेकिन मार्केट प्राइस 50 है, तो MU ज्यादा है. अब आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट इज 8, राइट? सो टोटल प्राइस उसका होना क्या चाहिए था? टेक्निकली 8 into 10 80 रुपए होना चाहिए था, लेकिन मार्केट प्राइस तो अभी भी 50 है. MU इज हायर, प्राइस इज लेसर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बंदा क्यों खरीदता जाएगा, क्योंकि उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है. ओके, ही मूव्स अप टू द थर्ड यूनिट. अब उसकी MU 7 हो गई, तो एक यूनिट का 10 रुपया, दैट मीन्स 7 यूनिट्स का 70. दैट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू इज 70, बट द मार्केट प्राइस इज 50. स्टिल इट इज हायर, कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय इट. फोर्थ यूनिट पे द मार्जिनल यूटिलिटी इज 5. नाउ हियर मार्जिनल यूटिलिटी का भी वैल्यू 50 है और प्राइस भी 50 है. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ equilibrium. Yeah, this is the time when a consumer would not be ready to buy one more unit till the time you reduce the price. Now this you will understand when I'll be teaching you law of demand. So do you understand the relationship between market price and the marginal utility? So if at all you can give marginal utility a value, a price, you will be able to understand that till when will the consumer be ready to buy at that particular price which is existing in the market? And this is what they are trying to tell you. So at the 5th unit, at the 4th unit technically, yes, 4th unit, your MU is 50 and your market price is also 50. This is what is being given in this particular chapter, and we come to an end of chapter number 2. So I hope all of you understand what is utility, types of utility, the benefits of utility, forms of utility, relationship between marginal utility and total utility, diminishing marginal utility, significance,
relationship between TU and MU, and last but not the least, relationship between marginal utility and price. If you have liked my lecture, please do like and comment, and yes, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.